in the first two matches has lost the match. So they will be feeling confident of chasing rather than setting a target for Pakistan. And this is smashed and just past the hand of the man at point. It was along the ground. There was no danger in that shot, but Hamid Sohail really got plenty of room, and it was a little difficult for him to get to the ball, but he got plenty of that on it, and it's 4 runs. That's bad bowling. Shot outside the off stump, pretty wide, I think. But Amir Sohail, as the ball is coming pretty slow, though it was uppish. I think it was he'd been dropped. The ball is certainly went close, yeah. Very, very close to him. Well, so they have to be a bit careful because the ball coming slow off the pitch, and they can make shots, but they have to be very careful. There are two ways of getting back into form. One is to plod your way through, and the other one is to go on the attack. For Zimbabwe, he's played almost all his cricket in South Africa, then migrated to Zimbabwe, and I could find this is a good shot. It's going to go to the boundary, and this time Saeed rising to his full height on the back foot, really got from top of the ball and put it away to cover the 4. That was a beautiful time shot. And as you call it, on the up of the back foot, played beautifully through the covers, and that's typical Saeed Anwar shot. And the pitch is so easy that I'm sure the match going to be 250 plus for each side. Especially the front foot and drives, a half drive, not really the full follow through or the flourish of the bat. Through the cover, it's fast point, and that's going for another 4. Well, that's what bowling, Shirab. He got a feel on the onside, and he's bowling outside the off stump. And I'm really surprised why he got a feel on the onside. This was right outside the off stump, his start. A perfect ball for Saeed Anwar to hit. It's a beautiful shot, bowling shot. A good try. Batsman Saeed in particular taking full advantage of those loose deliveries all over the place down the leg side, outside the off stump. And this morning Pakistan looking very, very positive and very confident. Do you remember any other sides trying to attack on the onside for these two openers? This is the first I have seen. The leg side is Brandeis, last ball of over number 5. Played in the air, safe. Now goes the second run. His army wants it, and this side will circle round. It will run with his 4 figure to make it round. 2 more runs, and over number 5, 40 without loss. And Saeed Anwar, he would not have been given LBW. Here's Brandeis. And good shot to the wicket, bring it on, and inverted boundary for 4 runs. Well, lucky batsman, and it throttled Amir Sohail up a little bit, and he went through the shot on the onside. Well, I think Pakistani batsmen must be grateful to the Zimbabwean bowlers and the captain for the strategy bowling on the onside. Once again, pitching middle and leg stump, ball coming in. It's very easy to play, and Amir is very fond of playing that shot, and he played it so beautifully. It's on the road. Chandra was talking, and unfortunately beat him in both towards the boundary. That's 4 more to Pakistan. And that next hit is over. That was the famous leg slip in this match, and it was the first time the ball went there, and he couldn't stop it. See, again attacking leg and middle, and this time he played so beautifully, rolling shot. There's no chance for this one international, so it's good for Pakistan if Amir gets his touch. And that's a lifted that high over the head of crowd jubilant. They've got these cards with 4 and 6 written on it at the moment. They're not impressed, but they're just waiting because that 6 really brought life into this small crowd here at the Rawalpindi Stadium. That was tremendous hit. Just watch his bat.
on the up, he lifted it towards mid-on. That's the difference between the lifting of Shahid Afridi and Saeed Anwar. He played, Afridi played cross. At least two more to Saeed Anwar there. Batsman there, Saeed and Ahmed, making this forward chip away pretty fast, because we are on the 13th over and already in the 70s. Yeah, still have Inzamam and Ijaz. And it's up in the air, that is dropped. And we're talking of the Zimbabwean fielding, but that was a very simple catch. It was in and out. Bad luck for Zimbabwe, bad luck for Grounders. That was a bad shot by Amir Sohail. He put it up in the air, up straight to the fielder, and surprisingly he dropped it. Really surprised me. If you see the standard of Zimbabwean fielding, most of the games happens. You catch some, you drop some. Yeah. As long as you catch more of them. And that was very quickly. The crowd here really appreciating that knock-on trade. Very well played, Saeed, and I'm sure he must be a happy and relieved man, because he must have got it. Small crowd here really appreciating the innings played by Saeed Anwar. 6 fours and 1 6 in just 39 deliveries. हालांकि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर ज्यादा है. शॉर्ट गेंद काफी देर तक सजा में रही, लेकिन महफूज तरीके से पॉइंट बाउंड्री की जानिब. नतीजे के तौर पर 4 रन. इस किस्म की गेंदें अगर कई रनों को की जाएंगी तो इंतजाम ऐसा ही होगा. तो गेंद का हुआ पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए. ये देखें, बहुत शॉर्ट गेंद और उसका पूरा फायदा उठाते हुए, गैप देखते हुए पॉइंट और कवर के दरमियान में से 4 रन के लिए बहुत ही तेज शॉट थे. सईद अनवर ने बहुत उम्दा बैटिंग का मुजाहरा. 62 पर बैटिंग कर रहे थे, करना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी स्पिन हुई. मिचेल बॉलिंग जारी रखेंगे. अच्छे तरीके से ड्राइव ऑफ साइड पर 2 रन बनेंगे. पाकिस्तान के 100 रन मुकम्मल हुए स्ट्रोक के साथ. ये देखें, मिड ऑफ की जानब 2 रन के लिए खेले, और ये काफी देर से इंतजार था ऐसी इनिंग्स का सईद अनवर से, क्योंकि पहले 2 मैचेस में उन्होंने कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी. उससे पहले बहुत उम्दा 2 सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने की, और उसके बाद कुछ अनफिट थे, लेकिन आज बहुत ही एक यादगार इनिंग. और आसान रन सईद अनवर के लिए. खड़े हुए फील्डर कवर्स की पोजीशन पर जोरदार तरीके से घुमा दिया. ऐसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब. गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. एक लूज गेंद, और उसका पूरा फायदा उठाया इजाज अहमद ने. पहुंचा दिया 4 रन के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. इजाज का जारहाना स्ट्रोक. ये देखें, फुल टॉस लेफ्ट स्टंप पर, और एक फ्री हिट इजाज को मिली, और उसका पूरा फायदा उठाया 4 रन मिड विकेट की जानिब. पाकिस्तान 106 इस चौके की मदद से. जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की जानिब. जहाज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग से दूसरा रन भी मुकम्मल हुआ. हमें डेंजर एंड आना था, लेकिन बर वक्त कॉल किया और अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया सईद अनवर ने. पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी ये चीज नोट करनी होगी, जैसे लाइन और लेंथ को बरकरार रखें. बाहर निकल आया उन्होंने कहा था, और यकीनी तौर पर सईद अनवर आउट. अंपायर का इशारा कि आप आउट हैं, तो इस तरह एक गैर जरूरी स्कोर देने की कोशिश में सईद अनवर अपनी विकेट गंवा बैठे. पाकिस्तान को एक जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा. सईद अनवर जो बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे थे, पॉइंट पर गेंद को खेलकर बाहर निकल आए और इस तरीके से आउट हुए. ये देखें, गैप में से एंगल किया सिंगल के लिए, लेकिन यस और नो, और काफी बड़ा रन आउट. और एक ऐसे मौके पर जबकि सईद अनवर बहुत उम्दा और बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि पिच पर उनको किसी किस्म की मुश्किल नहीं और रन आसानी से आ रहे हैं. इसी तरह हमने पहले
सईद अनवर से पहले इनका एक्सपीरियंस इस पिच पे कामयाबी पाकिस्तान को दिला सकता है और अच्छी बॉलिंग के लिए वो एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इंतजाम हक काफी दराज कद है, विकेट के खिलाफ अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। Where the captain lost his wicket, jumping down the track for some reason we can't really fathom. That's he was stroking the ball well. He may have been behind Saeed Anwar in a number of runs. He was doing pretty well. He was blocking one hand, giving chance to Saeed Anwar. Suddenly rush of blood. I'm very surprised. Very senior player. Spinners with a new ball. And he just comes down the track and he saw that mid-on was up in the circle and he sprayed it over the head and a comfortable 4 there for Ijaz. He likes to play the ball in the air, jumping out of his crease, and a perfectly safe shot with mid-on and mid-off inside the circle and 4 runs. Ijaz and Zabam both were restricted by the bowlers, so this time Ijaz took a chance over the head of mid-on, which was in the ring for 4. 132 for 2. And smashed over mid-wicket. And is it going to be a 6? Yes, it is. That was a rank bad ball, a long hop from Strang, and Ijaz took full control of it, quickly onto the back foot and over deep mid-wicket for 6. As I said earlier, you cannot afford to bowl a short pitch to Ijaz. You love to pull or cut, and that was pulled really hard. It was a massive hit. 37. But I can see though it's easier for the batsmen to play the pace bowlers. There's nothing much on the pitch. The pitch is slow, as you can see. Johnson is not moving the ball at all. He's just trying to bowl within the stumps. And this is the time, of course, between the 15th and the 35th over where the technical excellence of a batsman really is tested. And he has to play in the gaps with 4 or 5 men on the boundary. And Ijaz goes back for the second. He'll have to hurry, but the throw is at Inzamam's end, and that's good thinking, but he's safe. 151 for 2 at the end of the 31st over. The stump. Ijaz this time comes down the pitch and lifts him over the long boundary for a 6. A lovely shot there by Ijaz. Johnson shooting a little short of that, coming down the pitch. And the crowd are really delighted because the batsman have really delivered today. That is a massive hit. I don't think so there is much wrong about the bowling. They bowled to a proper length. He saw Ijaz coming out, so he just kept the ball a bit short. But Ijaz stays to bowl with. Very recent entry into the Zimbabwean side. Not a fielder move, neither did Inzamam, because he knew the minute it lifted the bat, that would be 4. Lovely shot, and the crowd really delighted. Something to cheer about after some time. That was presented to Inzamam, off volley, also the off stump. And Inzamam is very powerful. That was hit really hard. No chance for any fielder. Not even a single knock of 49. This is Ijaz. He's out here, excited, cheering the Pakistani batsman out, cheering Ijaz. He's really been amongst the runs in the series against Australia, now here with Zimbabwe. And his third and very crucial match of the 2-match series, one international series. Once again, Ijaz playing a fine inning for Pakistan. He's one of those batsmen in Pakistan side. He's the batsman in form. He scored a couple of centuries against Australia in the test matches, 100 in one international, and now again he got a 50 and he's going for a big score. And Ijaz comes down the pitch, he's lifted him towards the mid-off region. That is another 6 for Ijaz. And Fajr after signaling that 6. And crossing that up to Ijaz, and Ijaz really using his feet well. It was a massive hit.
full toss and hit it straight with a straight bat over the mid-off for a 6, a big hit. This time straight on. He beats the fielder, and obviously once it beats the fielder, it's 4 more. 2 jobs. Perhaps a little bad bounce for the fielder. We'll see that in the replay. The crowd really delighted by the 6 and 4 by job of consecutive deliveries. That's his favorite shot, square cut. Upward bounce for the fielder, but if you see the line boy, Strang not too happy. 6 and a 4, the first 2 deliveries. And there will be a single. A little more towards the left of the fielder there. That would have also raised towards the 198 now for 2. the pressure is building on the Zimbabweans now. You can see some bad fielding. There's another piece of bad fielding, misfield, but luckily. And this time it's Zimbabwe who sweeps, and it was the fielder at mid-wicket, batsman, we just get 1. Well, looks like that both the batsmen decided to push the score now. 12 runs coming off 4 deliveries of this over from Paul Strang. That's good batting by Jazz. He knows that already 12 runs are there in that over. So he didn't take any chance, just pushing it for a single. Not wasting any ball. The single brings 200 for Pakistan in the 39th over. There's an arm there coming down the pitch, but not getting hold of it. The end of Paul Strang's over. 200 for 2 of 39 overs. खेलना होगा क्योंकि ये ऐसा मैच है इस वक्त ओवर पिच गेंद और इजाज के लिए एक तोहफा था। 2 तरीके से इसे खेला और 4 रन हासिल किए इस तरीके से। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ने दोनों एक मैच जीत लिया है और सबसे इम्पोर्टेंट मैच ये पिंडी का बन गया, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है वनडे क्रिकेट में। तरीके से ऊंचा स्ट्रोक, ऑन साइड पे आउट होने का खतरा और इस तरह एक और कामयाबी जिम्बाब्वे को। इंतजामुल हक जो कि काफी अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे थे, एक ऊंचा स्ट्रोक खेलते हुए छक्का मारने की कोशिश में कैच आउट हुए मिड विकेट की पोजीशन पर। जी, इंतजाम की कोशिश थी कि इसको 6 मारा जाए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको टाइम करने की कोशिश की, लेकिन इसी तरीके से ये बॉल टाइम नहीं हो सकी और फील्डर जो कि डीप मैदान पे खड़े थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये कैच लिया। लेकिन ये कि इंतजाम की बैटिंग काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, काफ़ी स्ट्रोक्स बड़े अच्छे मारे हैं। एक कवर ड्राइव जो उन्होंने मारी थी मोइन की आपस में कॉम्बिनेशन रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत अच्छी है और अच्छी स्विंग्स भी ले सकें। कुछ गेंद इसको घुमा दिया है जी स्क्वायर की जानिब इजाज ने आसानी से और इजाज क्रीज पे रहेंगे। आप देखेंगे कि रनिंग बिटवीन द विकेट जो है उसमें नुमाया फर्क आ गया। ना तो आप चौका मार सकते हैं और सबसे बाहर गेंद इसको जोरदार तरीके से खेल दिया है डी बैक का बाउंड्री की जानिब। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। एक जोरदार स्ट्रोक और यहाँ पर मौजूद तमाशाइयों ने भरपूर तरीके से तालियां बजाकर शॉट सराहा और शाबाश दी मोइन खान। ये बहुत जो थी ऑफ स्टंप पे पड़ी थी। मोइन खान ने इस जो पॉइंट की तरफ ये स्ट्रोक को खेला, पॉइंट और कवर के दरमियान रुकाना चाहिए था। तो तब्दीली सही है बिल्कुल। एलबीडब्ल्यू के जबरदस्त अपील और इसके साथ ही आउट। तो इस तरह मोइन खान एलबीडब्ल्यू आउट हुए ब्रेंडिस की गेंद पर। पाकिस्तान 225 4 विकेटों के नुकसान पर। ब्रेंडिस की अच्छी लाइन लेंथ वाला गेंद, स्पीड में थोड़ी सी तब्दीली, लेंथ में थोड़ी सी तब्दीली और मोइन खान इसको सही तरीके से समझ नहीं पाए। हाँ जी, ये बॉल जो थी इन्होंने ऑफ ब्रेक स्टाइल से फेंकी थी और ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन मोइन जो थे बॉल पे काफ़ी गिर चुके थे और उनकी ये कोशिश थी कि इस बॉल के जरिए 1 रन बनाया जाए।
बड़ी जारहाना बैटिंग करे एजाज, तो कमांड आ चुका है उनको इस वक्त अपनी बैटिंग पे। बात घुमा दिया है उसको विकेट की जानिब, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इजाज का और जारहाना शॉट और समाचारियों का 200 करोड़ नुकता है उसको 93 पर। बड़ी अच्छी ड्राइव थी ऑन साइड पे, ब्रेंडिस की बॉल पे। बॉल जो है वो लेग साइड पे पड़ी थी और उसका पूरा फायदा उठाया। काफी जोरदार स्ट्रोक मारा डीप मिड विकेट की तरफ, और क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज है इसलिए चौका। जोरदार स्ट्रोक ऑन साइड पर, एक रन मुकम्मल किया, दूसरा बनाएंगे जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते। आसानी से 2 रन मुकम्मल किए इजाज ने। इजाज की जारहाना बैटिंग जारी है। इजाज इनफरादी तौर पर 4 विकेटों के नुकसान पर। Big hitters in Pakistan side. And Wasim Akram comes out of his crease and he wastes that full toss. One of the most entertaining and interesting overs of the fetching. This is the, you can say, the action-packed overs, and much depend on this over how much score Pakistan going to score. Tries to sweep it, taken on the pad. Now 2 dot deliveries, one down the leg side and 1 full toss. We're trying to sweep. Going to a very good line. Little. That ball bounced a little more than was seen expected. This time he goes for the big one, and it's a big one. Into the crowd for 6. It's the shot Wasim Akram had been waiting for. And it has sent this very big crowd, crowd on the ground, in great delight. That was a good shot. A bowler cannot do anything about it. It was pitched where he wanted to, but it was hit really hard. Now 99 and not 94, 96. Ijaz does play the ball in the air. Single is always much easier than hitting a boundary. The kind of mood that Ijaz was in, one might have seen Ijaz going for that big shot to get to his 100. And all he has to do is to tap the ball on either side of the wicket and get to his 100 and then go after the bowling. Johnson putting over the wicket for Ijaz. So basically down the leg side. We have 2 men up in the circle on the onside and 2 on the off. The fielder's being dropped back on the boundary, beat back with square leg. Has gone around, I would say, 4 or 5 yards inside the fence, and he's still going back. So he's going to be right at the edge of the boundary line. Here is Johnson on his way to Ijaz, who's at 99. And Ijaz gets his 100 and gets it in good style. He's going to be 101. Ijaz picks up century number 9 in one-day cricket. And what a wonderful 100 this has been. Full of really aggressive shots. He's hit 6 fours and 3 sixes in his score of 101. Without any doubt, a great inning by 215 matches for Ijaz. Good average of almost 32. Full toss and over the head of the fieldsman at deep mid wicket and into the fence. For 4. And the fielder there lost sight of the ball. He thought it was on the ground and then turned around. It was well over his head. Strick must be trying to bowl a Yorker, could not control his ball. That was a full toss, pulled over the head of the mid-wicket fielder. Another full toss. And it's gone through the hands of the fieldsman there. And it's crossed to the rope, so nothing really going for Zimbabwe, and Pakistan profiting from those fielding lapses. It would have been a very good stop, and the fielder there is hobbling a little bit. I thought it was a catch. And it may have been. Yeah, it was a good try. I would say dived at the last moment. And I think he landed on his knee.
the boundary. This time he cuts it out. And this is going to be a run out. Wasim Akram is gone. And he was down the wicket, and Ijaz slipped and fell. And Wasim Akram is walking back to the pavilion, 278 for 5 at the end of the 48th over. Well, sometimes it happens like this. Ijaz went for a big hit, slipped. And Wasim Akram just, I think he was looking at the fielder, so he didn't see Ijaz looking. So it was just going to be a batting total. No! Full toss, no ball. And down to wicket, and it's 4 runs. And Johnson, I think, is trying a little too hard to bowl within the stumps and go into the block hole. And it was quite a difficult stroke to play because he's a fast bowler. The ball came very, very quickly onto the bat, and it was a high full toss. It was called no ball because the ball was over the waist height. For the four-fielders, who have to stay within the 30-yard circle. Here is Street, 3 drives. Comes out of his crease, smashes it over the head of the wide and deep mid-wicket for 6. What a big shot. Once again, Street was trying to bowl a Yorker, could not control that ball and bowl a full toss, and very well played by Ijaz. And only a batsman of this caliber who scored 100 can play a shot like that. He was using his feet, lifted it over mid-on. A big hit. .294 for 5. Ijaz 126, 9 fours and 4 sixes. Another full toss. And just a single. Now you can see it's important for a batsman to stay in the last over. If you can score runs and stay in the last over. Street coming in with the last delivery. Ijaz plays it in the air. It could be caught. And he's gone. And Pakistan end their innings at 299 for the loss of 6 wickets. And Ijaz, the last man out of the last delivery of the 50th over, and Street strikes. So the target for Zimbabwe will be exactly 300 runs, an average of 6 per over. Very well played, Ijaz. He's the one who carried the Pakistani batting. Now everything is depending how the Pakistani bowler is going to bowl. 300 runs is an achievable target on a pitch like this. And let's see how the Pakistani bowlers who have been out of match practice going to bowl on this track. So very good performance by Pakistan, especially after their rather dismal batting display at Sheikhupura when they made just 211, and they were comprehensively beaten by Zimbabwe. This is a wonderful reply in the decider, the third one-day international, and that's the story of the Pakistan innings. Amir Suhail made 20, and Said made a wonderfully put together 73, very, very attractive of 63. Ijaz, the last man out of 131 in 102 balls. In good one, as you can see, the domination of Said Anwar. We're seeing a Premier bowler, Johnson and batsman. मखसूस वसीम अकरम की गेंद थी ऑफ साइड का ऑफ स्टंप ऊपर आती हुई तेज। आज ये बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉल गिरी थी और बाहर की तरफ जा रही थी। बैट्समैन ने उसको चेस करने की कोशिश की, क्योंकि वनडे क्रिकेट में अगर आप स्लिप भी मारें तो वो भी आपको स्कोर दे जाती है। मौजूद ड्राइव ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की जानिब ग्रांट पार का जा रहा ना स्ट्रोक, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्राइव सीधी बैट के दरमियानी हिस्से से ग्रांट फ्लावर की इस तरीके से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ग्रांट फ्लावर है बैट्समैन, वकाज से बॉलर।
जबरदस्त अपील और इसके साथ ही जो कि अच्छे सेट बैट्समैन नजर आ रहे थे यूनिट के बहुत से जिस बॉल पे आउट हुए हैं ये वर्ल्ड क्लास बॉल थी, बॉल पड़ के उछली है और तेज निकली है, इससे बड़े से बड़ा बॉलर बड़े से बड़ा भी बैट्समैन जो है इस बॉल को और साइड पे बाहर बॉल निकालने की कोशिश करेंगे। ड्राइव ऑफ साइड पर बॉलर के नीचे पीछे, गेंद की रफ्तार काफी तेज है। ये वसीम की जो बॉल थी वो पिच थी बिल्कुल बैट्समैन के नजदीक और अच्छी ड्राइव खेली, स्ट्रेट ड्राइव थी ये अगर आप देखें और काफी पावरफुल स्ट्रोक था, अच्छा टाइम किया उन्होंने। जॉनसन की फॉर्म बड़ी अच्छी है इस सीजन में और उन्होंने इससे पहले जो मैच जीता है जिम्बाब्वे के लिए उन्होंने जो 100 किया है उसी वजह से उनकी टीम जीती भी है। जॉनसन वसीम अकरम का सामना करेंगे में गेंद और उसके साथ ही जॉनसन के इनिंग का खात्मा। बड़ी अच्छी एंटिसिपेशन मोइन खान की और जॉनसन जो कि अच्छे तरीके से खेल रहे थे एक ड्राइव करने की कोशिश में, विकेट कीपर मोइन खान के हाथों कैच आउट हुआ। तो इस तरह से पाकिस्तान को लगातार दूसरी विकेट हासिल हुई पाकिस्तान को। ये देखिए, ये जी देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जॉनसन जो है ये बॉल को चेज करते हैं और अपनी बॉडी से दूर खेलते हैं बॉल को और उन्होंने वही स्ट्रोक खेला, बॉडी से दूर के बॉल को खेला, एच किया जिसको कि मोइन खान ने बड़ी खूबसूरत कैच लिया और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये लगता है कि अब मैच जो है वो वन साइडेड हो सकता है। थोड़े से इलाके में मौजूद है, हालांकि पूरे मुल्क में क्रिकेट नहीं और मुल्क भी बहुत छोटा है। काफी अंदर आई गेंद लेकिन अच्छे तरीके से ड्राइव ऑफ साइड पर फ्लावर का आसानी से 2 रन। आप जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं ये देखिए रिप्ले स्टंप से बाहर गेंद उसको प्लेस किया पॉइंट और कवर के दरमियान से 2 रन के लिए। पूरे जोर से शॉट कट नहीं की जो बाउंड्री लाइन तक जाए क्योंकि गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा मूव हुआ था। बाहर निकलकर जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की जानिब 4 रन। बहुत उम्दा शॉट, ये देखते हुए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और थोड़ा शॉट है, कदमों का इस्तेमाल किया और पॉइंट और गली से देखते हुए कि काफी बड़ा गैप है 4 रन के लिए थर्ड मैन की जानिब। बहुत तेज और बहुत उम्दा शॉट। गुडविन 4 रन के साथ पहुंच गए 15 पर। जोरदार ड्राइव ऑन साइड पर बहुत अच्छी फील्डिंग में है, विकेट ली जाए लेकिन इस पोजीशन में उनको बॉलिंग सिर्फ मेडिन ओवर या लेफ्ट पे करना चाहिए। जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर इस बार गुडविन की गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और गुडविन काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। And he's got him cut behind, slightly outside the off stump, little movement away from the right-handed batsman. He went for the drive, the big drive, without really getting to the pitch of the ball, his body and his feet away from the line, and well caught once again by Moin. He has taken all 3 catches. Well, that's a good line. You see the ball pitching on the middle and off and moving away from the batsman, and I'm sure Akib must be a happy person. A good breakthrough for Pakistan. 3 wickets on the rate of 4.3. Excellent. And he's also one of the Pakistan best off spinner in present cricket at the moment, and he also needs confidence. And he's one of those bowlers who always proved his worth playing for Pakistan. Down the leg
side. Getting the pairs to relax. First over from Saklan Mushtaq, the last delivery. And for the left-handed batsman, that ball came back. And Saklan has struck, and Zimbabwe have lost wicket number 4 at 85. He played across the line, you will see that. Saklan is one of the best spinner we have, Pakistan has. I was trying to play towards the onside, and he missed the line. That was a bad shot, but I would still believe that because Saklan was going within the stump, he got the result. The sharp single will get very safely into the crease by the end because the umpire is going up for the help of the TV umpire. And that's another thing one noticed in these matches recently when we watched that drive by Andy Clark. Mohammed Sohail picking up on the power, the TV umpire will be found. Shot there. The shot getting off the mark with that boundary. Very fine bowler's back drive. The ball pushed up to him. The shot coming by the batsman. Straight. It is straight back. In the bowling to Andy Flower who's on 22. He's off with 81. One! In Scotland, you notice that Andy Flower Portman Saklan with the ball is already really good to take his left foot in front and move for that sweep shot. He's done it 4 or 5 times. 96. 97 played towards the long leg region. And the ball moves on to 26. Selectors will be also a little bit because they have been making a lot of changes in the previous tour of Australia. In almost every match there were changes. And this time it's swept fine. Only running towards the boundary, will cross the road. Can wait for the umpire's signal. Yes, that's 4, that's off the bat. And Andy Flower, like we were discussing earlier, he's actually already made up his mind to sweep Saklan Mushtaq. Connecting very fine. Obviously, if you're bowling outside leg stump, that ball was almost outside leg stump. So there's no other choice. You have to be a sweeper. Otherwise, if you left alone, you might get a wide ball. So 5 runs coming off 2 deliveries from Saklan. Saklan, like everyone here knows and we've just discussed, one of the best off spinners in the game and one of the most consistent bowlers Pakistan is looking to But surprisingly, it was dropped at one stage. That's what I was talking about. The management must give them confidence. Turning towards the onside and like getting much across towards the top stump and you wait to see what happens, but that definitely must have been the case because That's the point. I'm really surprised. I think like I said, look at the crowd, they're just delighted. just look at again. Again he shuffled and leaves you like your legs alone. None the got after this match. He's not been amongst none on this particular tour. Zimbabwe losing their 5th wicket in the score of 102. I'm sure the Zimbabwe chuckles and leaves his legs down. आने की वजह से 100 का हुआ और 100 का जज किया इमाम का
और पाकिस्तान ने छठी जिम्बाब्वे की विकेट हासिल की और किलर इनके अलावा हों 4 रन के लिए। 115 जिम्बाब्वे। मिडल ओवर का गेंद, ये देखते हुए गेंद पर मुबारक की तरफ फाइन खेला 4 रन के लिए। उसके लेग स्पिनर ने काफी कोशिश की लेकिन गेंद बहुत फाइन खेला हुआ, ये देखते हुए क्या बनाया। वह फिर वकार, वसीम और आकब जुवैद का कॉम्बिनेशन। ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की जानिब। बैट्समैन हीट स्ट्रीक का 4 रन के लिए गेंद बाहर। इस तरह जिम्बाब्वे 120 विकेट के नुकसान पर। फील्डर्स काफी आगे हैं ऑफ साइड पर। ये देखिए ऑफ स्टंप पर आगे गेंद गिरा था जिसका पूरा फायदा उठाया एक आसान पिच पर। टांग निकाली बॉल की लाइन में और मिडल ऑफ द बैट एक्स्ट्रा कवर की जानिब जॉब में से 4 रन के लिए हासिल कर चुके हैं। बड़ी लंबी तुली और आला लाइन से गेंद की यहाँ तक फ्लावर को गेंद करेंगे। जबरदस्त फील्ड और इशारा देते हैं और इसका खात्मा हुआ। तरीके से आउट हुए शॉट खेली और बहुत उम्दा फील्डिंग, सीधा और बहुत बड़ा रन आउट। थर्ड अंपायर की जरूरत नहीं पड़ी और अंपायर जो वक्कर ने फौरी तौर पर रन आउट का इशारा दिया। बैट्समैन पाकिस्तान का जिम्बाब्वे का 25 ओवर के खुदाम पर आतिफ जावेद हैं बॉलर। पढ़ने के बाद गेंद थोड़ा सा आउट स्विंग हुआ और बैट्समैन बीट हुए। ये देखें ये लॉकेटर थोड़ा सा बॉल स्टैंड के खिलाफ लेकिन बच गए इस बार। काफी नजदीकी फैसला था ये। इस दौरान ओवरफ्लो हुई। दो मजीद अंदर गेंद आया कान को लग के प्रॉब्लम का रन आउट की कोशिश में लेकिन मिस फील्ड हुई और 5 बाई के रन के करीब की। इसके अलावा भी और ऑप्शन हो भी नहीं सकती। स्कोर बहुत ज्यादा पाकिस्तान का है जो इस वक्त रिसीवेबल किसी हालत में नजर नहीं आता, तो बेहतर ये सोचा उन्होंने कि विकेट पर स्टे किया जाए और कुछ रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाया जाए। 40 एंटी क्लार्क मीडिया एंड से बैट्समैन स्ट्रीक है। इस बार इसको घुमा दिया है ऑन साइड पर और स्पैन में। These drives and plays a lofted stroke over the head of the bowler, absolutely straight. It goes bouncing out to the boundary for 4 runs. Well, for Zimbabwe, there's nothing much left in the match except some personal performances. They've already lost 7 wickets and they have to chase 300 runs, which seems to be dictated at this stage. That's 50 for Indy Flower, and a fine 50 this has been. He's lost support at the other end. He's normally a good hitter of the ball, but he's been a little subdued, and out of character innings from Indy Flower. Still, 50 is very welcome. Cross match
left-footed shot that, but he's going to get runs. He will come back for the second. Here comes the throw from the outfield. It's a good one, slightly away from the wickets, but the batsman would have made the second quite safely. 162 for 7. Well, if you can see the field on the onside, I don't know why they have a field spread out on the onside for Strand. Trying something new in this one-day international. Well, that's the proper shot for that ball. And the proper result, 4 runs. And unfortunately, the end of the over. 170 for 7. They still have the life. He's folded. He's gone. He stayed that way for some time as if he was waiting for a photographer to take his picture, but he is gone, and Ahmed Suhail has struck at wicket number 8 down at 180. Looked like he was tired at the end of the day, the way he got out. He stayed there for a while. As you said, he's waiting for the photographer to take a photograph. See, he's still there. पता नहीं हम किस तरीके से हार गए, लेकिन ये है कि अगर आप ओवरऑल दोनों टीमों का मुआवजा करें तो आपको ये बात समझ में आती है कि हाँ, पाकिस्तान की टीम से कदरे बेहतर है, कदरे क्या बल्कि बहुत बेहतर है, और हमें जो शेखुपुरा में मैच हम हारे हैं वो नहीं हारना चाहिए था। जैसे कि आपने इस मैच जिम्बाब्वे की जो इनिंग्स था कि बकलाने ने भी उसकी बता। पाकिस्तान में मैंने तो कहीं पर सिर्फ रावलपिंडी में हमेशा देखा है, और सियालकोट में विकेट जो है वो थोड़ी कतरे तेज होती हैं, बाकी तो विकेट्स जो है वो ज़्यादातर तेज नहीं हुई। अगर ग्रास छोड़ने की प्रैक्टिस की जाए और छोटी छोटी ग्रास जो इंग्लिश ग्रास कहलाती है, अगर वो विकेट को हमें दी जाए। जिस तेज रफ्तार गेंद को वो ऑन साइड पे ऊंचा खेलना चाहते थे, वो उनकी तबक्कों के बरख बहुत ज़्यादा तेज निकली और उनकी दरमियानी स्टंप के ऊपर जाकर लगी। तो इस तरह से ब्रांडस की इनिंग्स का भी खात्मा हुआ। ब्रांडस 4 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल थी, सीधी बॉल थी, लेकिन बैट्समैन ने कोशिश की कि इस बॉल पे जल्दी से स्कोर किया जाए और उसको इस बॉल को हिट किया मिड विकेट में चौथे बैट्समैन से ये सीधी बॉल और वकीली उसको बैट्समैन जो है वो जोरदार शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ। 3 बॉल हो काफी तेज गेंद और 4 रन। इस मौके पे वकाली में बड़े अनलकी रहे और इनर एज लगी है बैट्समैन की। बैट्समैन बोल्ड होते होते बच गए। देखिए गेंद की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी और बिल्कुल कुछ नसीब रहे कि गेंद बैट के अंदरूनी किनारे पर लग के 4 रन के लिए बाहर गई। तो इस तरह बहुत ही अच्छा ओवर खत्म हुआ वकार यूनुस का। 7 ओवर। बॉल ना अंदर आई ना बाहर की तरफ निकली, लेकिन उसको बैट्समैन जो है वो जोरदार शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ। 3 बॉल हो काफी तेज गेंद और 4 रन। इस मौके पे वकाली में बड़े अनलकी रहे और इनर एज लगी है बैट्समैन की। बैट्समैन बोल्ड होते होते बच गए। देखिए गेंद की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी और बिल्कुल कुछ नसीब रहे कि गेंद बैट के अंदरूनी किनारे पर लग के 4 रन के लिए बाहर गई। तो इस तरह बहुत ही अच्छा ओवर खत्म हुआ वकार यूनुस का। 7 ओवर कर चुके हैं और 2 विकेटें भी हासिल की हैं। ये जो स्पेल आज काफ़ी देर के बाद ये देखिए एक और जाविये से ब्रांडस इस तरीके से टीम बोल रही। एक और जाविये से देखिए, लेकिन इससे पहले ये गेंद जिसको ऑन साइड पे खेल दिया बैट्समैन स्ट्रैंग हैं। 190 जिम्बाब्वे। IPW की अपील और इसके साथ जावेद हैदर का इशारा।
कि बैट्समैन आउट हैं, तो इस तरह से पाकिस्तान ने ये मैच बआसानी जीत लिया है। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई 37.2 गेंदों में, और इस तरह ये सीरीज भी पाकिस्तान ने जीत ली है। ये मैच बिल्कुल यकतरफा साबित हुआ। पाकिस्तान ने इंतहाई शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 302 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 191 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह ये सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली है। जी सही, ये बिल्कुल सीधी बॉल थी, उसको बीच से बैट्समैन खेलना चाहते थे। बिल्कुल उनका पैर जो था वो 3 विकेटों की सीध में था, और बॉल भी जो है वो बिल्कुल सीधी लगी, इसलिए ये बैट्समैन LBW डिक्लेयर किए गए। ये बहुत आसान मैच था पाकिस्तान के लिए, बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। और ये कहना चाहिए कि इस मैच का कोई ख़ास मज़ा नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मैच बड़ा कांटेदार होगा। लिहाजा जी ये LBW आउट हुए हैं बैट्समैन बॉल स्ट्राइक 20 रन बनाकर। जी, तो ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान ये सीरीज जीत गया है वनडे की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टेस्ट क्रिकेट की सीरीज भी जो है पाकिस्तान को 3-0 जीतनी चाहिए, क्योंकि जिम्बाब्वे की जो टीम है वो इस वक्त बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। ज़्यादातर बैट्समैन जो हैं वो खेलते हैं आउट गोइंग बॉल को बिल्कुल अपने जिस्म से दूर बना रखते हैं, और उनको अभी तक इतनी समझ नहीं आई है कि आउट गोइंग बॉल को या जो स्विंग कर रही है बॉल उसको किस तरह से बैक एंड पैक किस